आज हम बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस और ये फाइनल ईयर एग्जामिनेशन यानी एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्धारित समय 2 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 40। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन ए, हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम? द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। When was the first cement plant set up? 1904 in Chennai. ठीक है, आगे चलते हैं। Why was the Haldia port set up? Haldia was developed as a subsidiary port in order to relieve the growing pressure on the Kolkata port. ठीक है, आगे चलते हैं। Which organization recognized the political parties in India? Election Commission. ठीक है, इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज करता है, इलेक्शन कमीशन। यहां से आप देख सकते हो फोर्थ का इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज अ चेक? चेक क्या है? चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट्स टू द पर्सन विच नेम द चेक हैज बीन इश्यूड। ठीक है, नाउ वी हैव कम टू द सेक्शन बी। Describe the incidents of Jallianwala Bagh. जलियांवाला बाग, ठीक है, उस इंसिडेंट के बारे में आपको बताना है। तो यू हैव टू गो थ्रू विद दिस आंसर। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। ठीक है, तो आप इस आंसर को गो थ्रू करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, यस, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन लड़ती हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन द मेकिंग लॉज ऑफ द फॉर द कंट्री। पार्टीज फ्रॉम द रन गवर्नमेंट्स, दोज पार्टीज हु लूज इन द इलेक्शन प्ले अ रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टी इन पावर। Parties shape public opinion. Parties provide the people access to government machinery and welfare schemes. ठीक है, these are the roles of the political parties. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, दैट इज 8. Explain with examples how people are involved with banks. Yes, people are involved with banks as depositors and borrowers. People who have surplus funds deposit in the bank's safety as well as earn interest on the deposited money. On the other hand, those are in need of the money approach the banks for credit, in terms of which bank charge interest from the borrowers. Okay, now we have come to the section C. Explain 5 effects. Yes, explain 5 effects of the non-cooperation movement. Question number 9. Answer is foreign goods were boycotted and the foreign clothes were burned in huge bonfire. The liquid shops were picketed. The import of foreign clothes halved between 1921 to 1922, its value dropping from 102 crores to 57 crores. In many places, merchants have traders refused to trade in the foreign goods or finance foreign trade. Production of Indian textile mills, handlooms went up. Check. Now next one, question number 10. Mention some steps can be taken by the government to make the globalization fairer. The government can play a major role in making the globalization fairer. Its policies must be protected the interest not of the rich and powerful, but all the people in the country. Government must ensure that labor laws are properly implemented and workers get their rights. It can be support small producers to improve their performance till the time they become the strong enough to compete. If necessary, government can implement the trade and investment barriers. It can against the domination of the development countries of WTO. Okay, now come to the next question, that is section D. केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है,
यू हैव टू रीड दिस पैसेज योरसेल्फ. सीधा आते हैं सवाल पर. व्हाई डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? साइमन कमीशन जो है भारत में क्यों आया? टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999. Look back in the functioning of constitutional system of India and suggest changes. Next one. Which leader rejected the invitation of first roundtable conference? Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. What were the offer for dominion status for India? The Viceroy Lord announced October 1929 a vague offer of dominion status for India, unspecified future. A roundtable conference will be organized to discuss about the future constitution, any other relevant point. Now we have come to the question number 12. Read the source given below and answer the questions that follow. You have to read this source. Now we are coming to the question. Where has Konkan railway been developed? Konkan railway जो है कहाँ डेवलप किया गया था? Yes, Konkan railway was developed along the western coast of India. पश्चिमी घाट पर. Why renders Himalayan region unfavorable for the construction of railway lines? The high relief, sparse population, lack of economic opportunity, obstacles for construction of railways in the Himalayan region. Which factors influence the distribution of pattern of railway network in the country? The distribution pattern of the railway network in the country is influenced by the physiographic and economic and administrative factors. ठीक है. नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मैप बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस पर आ रहे हैं हम. यस, सेक्शन ई. ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द प्लेस as help the following information, write the correct name of the line marked it. A. A place in Bihar where pigeons struggle against the indigo plantation. नील की खेती के विरोध में किसानों का जो संघर्ष कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था चंपारण में. चंपारण में. ठीक है. नरौरा कहाँ पर है बताना है. तारापुर कहाँ पर है? मीना बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नरौरा पता है उत्तर प्रदेश में है. तो चलिए देखते हैं इसको मैप पर. ठीक है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखिए मैप पर तो ए पार्ट हमें जो है दिखाया गया है, ये चंपारण है. दिस इज चंपारण इज इन बिहार. ठीक है. नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द नरौरा, यूपी में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट. तारापुर इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर प्लांट. दिस इज हियर इन महाराष्ट्र. नेक्स्ट वन, मीनबक्कम एयरपोर्ट चेन्नई में है. एयरपोर्ट. ठीक है. तो इस तरह आपको ये चीज़ें जो है इंडियन पॉलिटिकल मैप पर आपको शो करना था. ठीक है. तो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस एनुअल एग्जामिनेशन. दिस इज इनफ फॉर दिस वन. थैंक यू.